Hello people and welcome to Shifting Gears, and it is quite an exciting day today because Skoda has unveiled their all new Kushaq SUV. This Skoda Kushaq is going to rival the likes of the Hyundai Creta and the Kia Seltos, and this is a very important car for Skoda here in India. This is a car made in India, but it is also made for the world, and this car will debut here officially in just a few weeks from now. चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं what is so special about this Skoda Kushaq. क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं? Is this car luxurious enough? Is this comfortable enough? And should you spend all your hard-earned money and bring this one home? आज इस Skoda Kushaq SUV का सिर्फ वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है, but the car that you see today in this video is the production spec model of this all-new SUV. You can buy it in grey, silver, white, red, and orange paint options. Skoda Kushaq measures 4225 mm in length, 1760 mm in width, 1612 mm in height, और इस गाड़ी के साथ आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है. The brand claims that this car has the longest wheelbase at 2651 mm and there is going to be enough room for 5 occupants inside this SUV. And for your luggage, Skoda की Kushaq आपको 385 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर करेगी. कुशाक की 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल मोटर 115 PS की पावर और 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली है, और 1 लीटर TSI मोटर के साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा. अगर आपको ज्यादा पावर की जरूरत है तो आप इस गाड़ी का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल मोटर खरीद सकते हो जो प्रोड्यूस करता है 150 PS की पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क, और इस 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर एक 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाता है. जब आप बॉनेट ओपन कर लोगे यू विल नोटिस दैट द इंजन बे एरिया हैज बीन डन अप क्वाइट नाइसली एंड यू आल्सो गेट अ नाइस इंजन हेड कवर फॉर दिस Skoda Kushaq. I hope Skoda offers a nice and long warranty period which will attract a lot more buyers for this Kushaq. And now finally let's check out the Skoda Kushaq. Under the India 2.0 project, ये Skoda की सबसे पहली ऑल न्यू कार है here for the Indian market. The brand claims that they have achieved close to 95% localization for this all new Skoda Kushaq, which by the way is a 5-seater SUV. इसमें आपको कोई भी 7-seat option नहीं मिलने वाला है, and we don't even know if there is going to be a bigger Kushaq, but then Skoda doesn't need it because they have the Skoda Kodiaq here on offer in the Indian market. डायमेंशंस की अगर बात करें तो आप इस गाड़ी को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो विद द लाइक्स ऑफ द क्रेटा एंड द सेल्टोस, लेकिन MG की हेक्टर और टाटा की सफारी, बोथ दीज कार्स आर गोइंग टू बी अ साइज अप कंपेयर्ड टू दिस Skoda Kushaq. Skoda ने इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में हमें कोई भी हिंट नहीं दिया है, बट गोइंग बाय द सेगमेंट स्टैंडर्ड्स आप कंसिडर कर सकते हो कि Kushaq की एक शोरूम कीमत जो है इट कैन स्टार्ट फ्रॉम क्लोज टू 10 लाख रुपीज एंड कैन गो ऑल द वे अप टू 16 लाख रुपीज. I must say that Skoda has done a fantastic job in the design department, क्योंकि विजन आयन कॉन्सेप्ट से जब आप इस Kushaq को कंपेयर कर लोगे, the design stays true and there are a lot of elements which customers will like here in the Indian market and as per 2021 standards. ये जो Skoda की Kushaq है, it does look nice, it looks classy and it has everything that you might need from a car in today's date. एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स की अगर बात करें तो आपको टिपिकल Skoda ग्रिल यहाँ पे देखने मिलेगा. यू हैव अ हेल्दी डोज ऑफ क्रोम अराउंड द ग्रिल सेक्शन एंड द ग्रिल ओवरऑल हैज बीन डन अप इन ब्लैक, लुक्स क्वाइट नाइस. आफ्टर दैट आप देख लीजिए कि इस गाड़ी के जो हेडलैम्प्स हैं यहाँ पे आपको स्मोक इफेक्ट देखने मिलेगा एंड यू गेट फुल LED हेडलैम्प्स ओवर हियर विद द Kushaq, and the fog lamps have been positioned just under the headlamps and not conventionally lower down on the bumper. बम्पर पे आपको काफी बॉडी क्लैडिंग देखने मिलेगी एंड यू ऑल्सो हैव अ सिल्वर स्किड प्लेट इफेक्ट. The Kushaq is going to ride on 17-inch dual-tone alloy wheels and the design is very striking and very stylish yet very classy. आपको व्हील बेस सेक्शन में भी बॉडी क्लैडिंग देखने मिलेगी टिपिकल ऑफ SUVs, बट द रेयर व्हील डजंट गेट डिस्क ब्रेक्स. आपको रूफ रेल्स भी दिए गए हैं विद दिस कार एंड यू ऑल्सो हैव Skoda branding on the front fender. Wheel arches have a subtle flare design and there are plenty of cuts and crease lines all around the car. Window sill area पे आपको chrome accents दिए गए हैं and you get chrome accents even on the door handles.
Moving to the rear end design of this Kushaq, you will notice that it is reminiscent of the Skoda SUV lineup. यहाँ पे आपको जो LED tail lamps दिए गए हैं, they look fantastic. The detailing is just brilliant and you have a lot of that crystalline effect over here on the tail lamp as well. आपको टेल गेट पे कुशाक की ब्रांडिंग देखने मिलेगी और टेल लैम्प के नीचे बम्पर पे आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया है. यू कैन नोटिस दैट you have Skoda lettering on the tailgate. You do not get a logo over here, and over the number plate housing आपको इसका reverse parking camera देखने मिलेगा. For safety and convenience and of course for visibility, you also have a rear wash and wipe. Tailgate पे आपको एक chrome strip भी मिलने वाली है, and then on the rear bumper also you have a lot of body cladding and a silver skid plate effect. Skoda Kushaq के इंटीरियर्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं बिकॉज इट लुक्स वेरी नाइस एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट. इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे आपको लेदर रैप दिया गया है, बट द स्टीयरिंग व्हील इज ऑफ अ 2 स्पोक डिजाइन. इट इज़ वेरी यूनिक और इस सेगमेंट में ये आपको काफ़ी खास लगने वाला है. यू हैव कन्वेंशनल डायल सेटअप्स फॉर योर स्पीडोमीटर क्लस्टर, सो दिस इज अ बिग मिस बिकॉज यू डू नॉट गेट डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर इन 2021. आपको एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दिया गया है जिसमें कलर डिस्प्ले मिलने वाला है आपको. यू हैव ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विच इज अ टच पैनल और एसी कंट्रोल्स के नीचे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है. इट्स अ मॉडर्न कार, सो यू गेट 2 USB Type-C चार्जिंग पॉइंट्स. गियर लीवर पे आपको लेदर रैप देखने मिलेगा और गियर लीवर के पीछे आपको कप होल्डर्स भी दिए गए हैं. फॉर कन्वीनियंस ऑन योर लॉन्ग ड्राइव्स, इस गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है इट इज गोइंग टू बी कूल्ड सो दैट यू कैन हैव योर ड्रिंक्स चिल्ड ऑन द गो. और इस गाड़ी में आपको एम्बिएंट लाइट्स भी मिलने वाले हैं. टू एड सम ड्रामा टू योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इस गाड़ी में आपको एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सनरूफ दिया गया है, बट इट इज नॉट ऑफ द पैनोरामिक टाइप लाइक यू सी ऑन द Hyundai Creta एंड द MG Hector. कुशाक के इंटीरियर कैबिन को प्रीमियम बनाने के लिए यहाँ पे आपको लेदर सीट्स मिलने वाले हैं. यू कैन नोटिस दैट द सीट्स आर ऑफ द ड्यूअल टोन टाइप एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस यू हैव कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग. आपको फ्रंट सीट्स पे वेंटिलेटेड फंक्शन मिलने वाला है विच इज वेरी यूजफुल हियर इन द हॉट एंड ह्यूमिड इंडियन वेदर कंडीशंस. And the engine start stop button has been positioned on the steering column of this car. Rear cabin looks nice and roomy right now, but we will talk more about this when we have the car with us for a review. आपको पीछे तीनों occupants के लिए adjustable headrests मिलने वाले हैं, and for your comfort and convenience, the rear cabin also has 2 AC vents along with 2 USB Type-C charging points. The back seat armrest is going to have 2 cup holders and there is ample storage even on the rear door pad. अब Skoda का ये कहना है that 3 adults can be seated here in the back seat of this Kushaq, but we will try that out when we have this car for a review. But just notice how the cabin looks. You have leather seats all around and गाड़ी का जो फ्लोर कारपेट है it has been finished in black, so it is going to be easy to clean and easy to maintain. अगर आपको एक डिस्को ऑन व्हील्स पसंद है तो इस Skoda Kushaq के साथ आपको एक सब वूफर भी मिलने वाला है along with 6 speakers inside the cabin. Skoda की ये ऑल न्यू Kushaq Volkswagen के आने वाले टाइगुन SUV के साथ अपनी इंजन, अपनी चैसी और काफी सारे कंपोनेंट्स शेयर करने वाली है. But this all new Skoda Kushaq is very special because this car is going to drive in volumes for the Skoda brand here in India. Skoda ने काफी सालों से कोई भी मास मार्केट गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं की है. The Rapid right now is a really old car, but there is a Rapid replacement coming here in the Indian market very soon. और वो गाड़ी भी MQB A0iN प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, which is the same chassis which is being used for this Skoda Kushaq. So if you ask me, I really like the Skoda Kushaq. It looks like a nice and promising product. All that the brand has to do now is price it right and offer the Indian car buyer a generous warranty period to attract them to the Skoda showroom. Comments में आप हमें जरूर बताइएगा what do you think about this Skoda Kushaq? Do you like it or do you dislike it? Will you buy it over the Hyundai Creta and Kia Seltos? या अगर आपको एक बड़ी SUV चाहिए, will you prefer the Tata Harrier or the MG Hector? Whatever is your opinion, let us know. अगर आपके और कोई सवाल है, you can ask me all of that in the comments below and I will try my best to help you out. So then see you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel, press the bell icon if you haven't till now, and always guys, drive safe, always wear your seatbelts and enjoy motoring, enjoy being behind the wheel.